the brightest candles of our college, honorable principal sir, the ever-burning candles, and your future makers, respected teachers, guests, and my dear friends. Good morning to all of you. First of all, I introduce myself. I Sam Hussain, under the PS Nadiaganj in the district of West Champaran, Bihar. ये बोलवे करेगा I am behalf नहीं of, मानेगा ये पूरा पता बोला। I am behalf of this PTSU Mahendra, heartily welcome you all on this precious occasion as well as glorious morning of this Republic Day celebration. Today, after a pretty long times, we are getting a golden chance together here in order to celebrate Republic Day. This day reminds us selfless sacrifices of the great patriots and martyrs of our country, who sacrificed their lives for the sake of their motherlands. Here in my brief speech, today I am going to highlight the significance of this very day in the light of historic events. The national flag is the symbol of our pride, prestige, dignity. It is a mark of Indian cultures and civilizations. As we know that our country remained under the British government for a long time. They continued us for about 2 centuries. They approached us in many ways. They treat us like animals. After the efforts of Gandhi, Nehru, Subhash, Kalam, Sajjad Tilak, our country became free on 15 August 1947. At a time of freedom, Netaji Subhash Chandra Bose, once addressing the Azad Hind Fauj, said, "Give me blood and I will give you freedom." For the lone purpose of Maulana Muhammad Ali Jawhar, a great patriot, attended the round table conference held in London. During his impressive and influential speech addressing the British rule, boldly said, "I can't go back to slave country until or unless I have bond of freedom in my hand. If you don't accept my proposal, we will provide me a little space for my grave." These statements of Maulana come from the depth of heart that the Honorable Maulana bade goodbye to a perishable world there in London. And at last comes in the history of Indian national movements when Mahatma Gandhi made an appeal to the Indian peoples, "My dear countrymen, now you have only 2 options. Let's do or die." As the result of these slogans, all the Indian peoples, whether men or women, children, are jumped into the revolution and shook the foundation of British Emperor. Thus the Englishmen were forced to leave India as soon as possible. Thus our country became free on 15 August 1947. Thereafter, Dr. Bhimrao Ambedkar and his colleagues wrote the constitutions of India. This constitution was first applied on 26 January 1915. The Republic Day shows that we are not only great but also the powerful and self-dependent. वाह Today you live and die for our country. Long live the Republic Day. Thank you. मैं आपके सामने एक शेर पेश करने जा रहा हूँ. थोड़ा सा इरशाद है इरशाद जब आंखें खुले तो जमीन हिंदुस्तान की हो, जब आंखें खुले तो जमीन हिंदुस्तान की हो, जब आंखें बंद हो तो चांद हिंदुस्तान की हो. जब आंखें खुले तो जमीन हिंदुस्तान की हो, जब आंखें बंद हो तो चांद हिंदुस्तान की हो. हम मर भी जाए तो कुछ गम नहीं है, लेकिन मरते वक्त ये मिट्टी हिंदुस्तान की हो, मरते वक्त ये मिट्टी हिंदुस्तान की हो. जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता. जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता. नोटों में भी लिपट कर, सोनों में भी सिपट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे झंडे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, कोई कफन नहीं होता. एक अंदाजे बयां और है. आपके सामने एक लास्ट शेर है. कोई दिक्कत नहीं है. की महकता, किसी गजरे की महक को मैं महकता छोड़ आया हूँ, किसी गजरे की खुशबू को मैं महकता छोड़ आया हूँ. अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ. गजरा है भी. चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ. मुझे तू अपने सीने से लगा ले भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ, तरसता छोड़ आया हूँ, तरसता छोड़ आया हूँ. लास्टली, आज यौम आज़ादी मनाया बजा, आज यौम जमहूरी मनाया बजा. कासिम चांद तारों से पूछो, एक उजड़े चमनदार को क्या मिला. इस वतन की बहारों से पूछो, इस वतन की अलम में है जिसका कफन. ऐ शहीदे वतन, ऐ शहीदे वतन. जय हिंद, जय भारत. बहुत बढ़िया. आ गया लौंडे.